Hello everyone, welcome to Camel Young Artist Workshops. Myself Snehal Salunke, also known as Nehu's Magic. Let's get started. So today I'll be using Camel 8 by 10 inch canvas board, and for painting I'll be using this Camel acrylic colors pack of 20 shades. And I'll be using this Camel synthetic gold brushes. So yeah, let's get started. So today I'll be painting the perfect portrait of Puss in the Boots. And for making sketch I'll be using the Supreme HD Camlin pencil. First हम लोग फेस से स्टार्ट करेंगे. So first we will mark means take the ratio. यहाँ से हम लोग फेस बनाएंगे, यहाँ पे हैट आएगी. इतने पोर्शन में हमारा फेस कंप्लीट होगा. एंड ये पर्सन बूट ने हैट पहनी है, सो हैट के लिए हम लोग ने ऊपर स्पेस छोड़ी है थोड़ी. ओके, यहाँ के चीक्स थोड़े हम लोग को बड़े बनाने हैं. यू कैन मेक इट लाइक डी. ओके, सच डी, कर्वी डी. यहाँ से नीचे आना. दैट्स इट. एंड यू कैन एडजस्ट द शेप ऑफ द फेस वाइल पेंटिंग, सो नो वरीज. थोड़ा अगर इधर उधर हो गया तो शेडिंग करने के टाइम यू कैन डू इट. ओके, डन विथ मेकिंग फेस. नाउ विल मेक द हैट. ये हैट का हम लोग ऊपर का पोर्शन बाद में एडजस्ट करेंगे. सो नाउ विल मेक लाइक स्कार्फ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द हैट. मीन्स जो उन्होंने हैट टाई की है. नीचे की लाइन बना के लेते हैं. सो विल गेट द आइडिया. यहाँ तक उसके हैंड्स जाएंगे. एक हाथ में उसने चिकन पकड़ा है और एक हैंड टेबल पे है. ओके, I'm making the rough sketch of fingers and make it in detailing while painting. We'll adjust the shade and everything while painting. So now we'll adjust the hat. Hat का ऐसे shape होगा. ये portion यहाँ से start होगा. So let's start making the eyes, mouth, everything. Okay. सो ये आइज ज्वाइन नहीं करने हैं बिकॉज उसका नोज का शेप प्रॉपरली आना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस कर्वी. We have made one eye bigger and one eye bit smaller than that. So for making nose, just we'll make ulta wala triangle. अभी हम लोग माउथ बनाएंगे. यहाँ पे 2 ओवल शेप्स. इसे यू कैन मेक बिट लाइटली. एंड yeah, we have to make smiley face. So we can start painting. So painting करना face से start करेंगे. And for painting this face, I'll be using orange camel acrylic paint, yellow camel acrylic paint, and the skin color light peach color. We have to make this shade by mixing 2 or 3 different colors. Okay. For depthness, we'll use darker shade. And if needed, you can add bit brown also. Use burnt sheen paint. Okay. Use bit brown, not much. So I have started painting from cheeks. This is lighter shade. Don't use darker shade first. Okay, it will get spoiled if you use darker shade. पहले हम लोग पूरा ये जो पेंट लिया है वो पूरे फेस पे करके लेंगे. Then after that we'll add detailing shade wise, darker and lighter. So we are done with making face, and we'll use same color for the hands of the Puss in Boots. So let's start making these hands. For this I am using a 6 number Camel synthetic gold brush. This is the perfect size for filling the areas.
You have to paint this in whole area and we'll add the shades later on. Means जो hairs की detailing वगैरह है will add later on. We have means repeated the same process जो face पे की है वही यहाँ पे की है. So now we'll add peach color to the middle area and we'll be adding golden yellow. I'm just adding the one drop of yellow shade in this. Just ये proper peach नहीं बनाना है. You can see here, but I am adding this shade so it will be properly visible to you all. Okay. So while painting with acrylic color, you have to take care of drying the paints and all. Otherwise, it will get messed up. Till then, I'll make this cheeks. पर्स की cheeks बनाते हैं. Okay. सी यहाँ पे थोड़ा लाइटर शेड दिया है. सो जहाँ जहाँ पे ये लाइटर एरिया है वहाँ पे हम लोग ये सेम शेड जो मिक्स किया है मिडल पोर्शन के लिए वो यहाँ पे देंगे. सो आई एम यूजिंग दिस सेम शेड टू ऐड द डिटेलिंग ऑफ हैंड्स. मीन्स जो हैंड की बॉर्डर है उस पर आपको ऐसे लाइटर शेड्स देने हैं. सो मैं थोड़े से चीक्स को हाईलाइट कर रही हूँ. एडिंग द फरी डिटेल्स ऑन इट. लेट्स ऐड द ब्राउन शेड. मीन्स अभी हम लोग को ये डिटेलिंग दिखानी है. फॉर डिटेलिंग इन हैरी पार्ट वी आर गोना यूज द ब्राउन शेड. सो इसे हाईलाइट करना होगा. आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस पिक्चर. सो जब तक ये ड्राई नहीं होता ये वाला पोर्शन वी कैन कंप्लीट द हैरी पार्ट, the fur of hands. For making fur you have to just add the small lines like this. You can add randomly. Okay, let's go ahead. Now we'll paint the eyes. For eyes I am using this lemon yellow and light green shade. Will give you the perfect shade of the eye. So पहले हम लोग ये वाला आई पेंट करते हैं. So now we'll paint the nose and the mouth. I'm using crimson red paint. Use a smaller number brush to paint nose, okay? And the same shade we'll be using to paint the tongue of the pus. Skin color बनाने के लिए we have make the peach shade and a bit amount of yellow shade in it. We'll paint the tail. For painting the tail I am using same shade which we have used this in the middle portion. This will be adding bit yellow. Mix the shade properly so you will get the perfect shade of fur. I'll mark the area जहाँ पे मुझे ये tail बनाना है. So यहाँ से यहाँ तक. And we can add the details later on after this paint will get dry. So ऐसे थोड़े थोड़े ये टेल के फर हैरी दिखाने हैं. Can add such strokes with the help of this flat brush so it will look bit hairy. Okay. So we'll start painting the hat. For painting hat I am using the black and white color. First I'll make the border. So ये hat हम लोग ने जो रफ स्केच ड्रॉ किया है. Just make the border properly with the help of pointed brush. ये एरिया ड्राई हुआ है so I can put my hand on this area. और ब्लैक कलर के साथ मैस मत करना.
paint the half grey part and half part with black to show the darker and depthness. So here I am doing the blending of the grey and black shade. Mix a brown and peach color shade. You can add such lines. Draw the lines carefully. I'll draw the lines with this small brush, zero number brush. So let's add the detailing lines with white color. So let's add black color with same brush. I am adding detailing. Dome structure for the eyes. Let's add a border like this. You have to add the detailing. Same I'll do for this eyes also, same process. Done with making the eyes, we'll go for mouth and later on we'll add this detailing. Just add this smile properly as it's important factor. I'm making this chicken with the same peach shade. So after this, let's add a blue background with this sky blue shade, light blue, ultramarine blue. We'll add bit watery shade. I'm adding this white color shade. So yeah, done. For leaves, I'll be using the dark green shade, light green shade and a sap green. So we'll show how to paint the tropical leaves. First we'll paint the branch. ब्रश को ऐसे पुश करेंगे. In such way we can make a tropical leaves. So I'll be adding bit grassy effect here. I'll show you this leaf, okay? One leaf I'll show you how I have made that. And after this stroke, you can add a sap green color, okay? And then with the dark green shade. So for lighter shade, I'll be adding a base with same sap green and the top layer with this. So you have to wait till it dry, then you have to add the top layer. I'm adding such small grass kind of. Once this leaf get dry, you can add the lines of the leaves. I'll just add one stroke of black so it will finish the painting. So yeah, here I am finishing my painting. Once you finish your painting, you can tag the Kokyo Camlin on Instagram and you can also tag me, that is Snehu's Magic. I'd love to see your outcome. I'd like to see your creations. So till then, keep creating and keep inspiring. Bye bye.